आफ्टरनून बातचीत करी. ओके, सेंटर टैब, गुड आफ्टरनून. Deepan, good afternoon. Aditi, good afternoon. Good afternoon to all of you. Yesterday, we started with the center tabbed transformer. तो हम लोगों ने सेंटर टैब ट्रांसफॉर्मर समझा क्या होता है, उसके बारे में बातचीत करी. ओके, सो जयदीप, गुड आफ्टरनून बेटा. मैं अच्छा हूँ, थैंक यू. गुड आफ्टरनून अंजलि. विशाल, वेरी गुड आफ्टरनून. RECT रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म, क्या कहना चाह रहे हो? रेक्टिफायर, ओके. अनिकेत सर, मैंने आपको रिकॉर्डेड भी कर रखा है इसलिए पूछा सर. उसी ऑर्डर में चलेगा. पहले डायोड पढ़ेंगे, फिर बीजीटी करेंगे, फिर मॉस में जाएंगे, फिर ओपैम्प में जाएंगे, फिर ऑसिलेटर्स, बाकी उसके बाद जो बाकी टॉपिक्स हैं. ठीक है. गुड आफ्टरनून दिवाकर, गुड आफ्टरनून. चलिए, सुना हूं. अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर में चीजें कैलकुलेट करी थी वैसे यहां पे करेंगे. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद instantaneous आउटपुट करंट I. ठीक है, तो पहले हम इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट I निकालेंगे. सो आपको पता है, वेरी गुड आफ्टरनून संजय, आपको पता है कि डिफरेंट एंगल्स के लिए डिफरेंट जो है, डिफरेंट हाफ साइकिल्स के लिए डिफरेंट बिहेवियर था डायोड्स का. तो पहले हम लोग करेंगे अल्फा 0 टू पाई. जब अल्फा 0 टू पाई था, सर्किट आपको याद है, सर्किट बना हुआ है. ठीक है, ऊपर वाला डायोड D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस था, और जो नीचे वाला डायोड D2 था वो रिवर्स बायस था. सर मेरा मिड सेम एग्जाम है 3 बजे से. ओके राजन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. आई होप यू विल डू गुड इन द एग्जामिनेशन. अंकिता, गुड आफ्टरनून. शौर्य, गुड आफ्टरनून. तो बेटा ये हमारे पास सेकेंडरी है. सेकेंडरी में डायोड 1 जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड है. सो आई एम रिप्लेसिंग इट विद फॉरवर्ड रेजिस्टेंस RF. You can even assume RF to be 0, or you can introduce V gamma also. You already know everything. Utpal, good afternoon. Nishika, good afternoon. And जो आपके पास यहां पे वोल्टेज थी वो VA थी, यहां पे जो वोल्टेज थी वो VB थी. डायोड हमारा नीचे वाला ओपन है. दिस इज लोड रेजिस्टेंस RL, आउटपुट वोल्टेज V0, the instantaneous output current I, which I am interested in calculating also. Ankit, good afternoon. So now, from here you can see what is the value of I. I की वैल्यू कितनी है? आप देखो बेटा, ये है करंट का पाथ, दिस इज द पाथ. अदरवाइज अब वो वाला सर्किट देख लो जो ऐसे बनाया था मैंने, RL वाला जो सबसे पहला सर्किट था, उसमें ऐसे करके देख लो अगर वो इजी लगता है तो. ठीक है, ये अदरवाइज ये ज्यादा इजी रहता है. यहां से सामने दिखता ही आ गया. So you can see the current I will be the voltage VA divided by the two resistors which are connected in series, that is RF plus RL. That is I is equal to, what is VA? We wrote it Vm sin alpha yesterday. I hope याद होगा आपको. Divided by RF plus RL. So finally I is coming as Im sin alpha, जहां पे
आई एम है हमारे पास वी एम अपॉन आर एफ प्लस आर एल। ये इंस्टेंटेनियस करंट आई है जब मैं 0 से पाई तक जा रहा हूं। नाउ इफ आई गो फ्रॉम पाई टू 2 पाई, देन व्हाट विल हैपन, आई वांट टू सी। So second case B, alpha is from pi to 2 pi. If it is from pi to 2 pi, now you know that D1 is reverse biased, ऊपर वाला reverse biased है, and D2 is forward biased. This is the situation now. So D1 is open and D2 is forward biased. So this is the circuit that we have. Now let's talk about I. I is equal to, अब बेटा ये सर्किट है, ठीक है, तो I कितना हो जाएगा, VB डिवाइडेड बाय RF प्लस RL। नाउ व्हाट इज VB? याद है कल VB कितना था? VB वाज माइनस VM साइन अल्फा। ओके, VB वाज माइनस VM साइन अल्फा, कल लिखा था मैंने, आपको लिख के दिया था, अपॉन RF प्लस RL। Hence I is equal to minus IM sin alpha, where IM is same value which was last time, VM upon RF plus RL। ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस करंट निकल के आई है। सो इफ आई पुट इट इन अ सिंगल इक्वेशन, so you can see current I of t, the instantaneous output current, it is coming as Im sin alpha when alpha is from 0 to pi, and minus Im sin alpha when alpha is from pi to 2 pi। ये आइए बेटा आपकी इंस्टेंटेनियस करंट। क्लियर हो गया सबको? इज दिस क्लियर? जहां पे हमारे पास IM कितना है, VM अपॉन RF प्लस RL, VM अपॉन RF प्लस RL। सो नाउ इफ आई प्लॉट इट, मैं अगर इसकी वेवफॉर्म बनाता हूं, आप इजीली देख सकते हैं, जब पॉजिटिव है तो IM साइन अल्फा, जब पाई से 2 पाई तो साइन अल्फा नेगेटिव 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 पॉजिटिव की पूरी टर्म पॉजिटिव, एंड सो ऑन। सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस करंट, दिस इज द इंस्टेंटेनियस करंट। क्लियर है सबको? क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस करंट निकल गई हमारी। चलिए अब चलते हैं सेकंड केस में। नाउ वी वांट डीसी आउटपुट करंट। फॉर्मूला पाई, पाई क्योंकि पाई के बाद रिपीटिशन है, सो इट विल बी 1 by पाई इंटीग्रल खुद इंटीग्रेशन छोटी सी है, खुद कर लेना, ठीक है। नाउ दिस टाइम आई एम नॉट डूइंग ऑल दिस थिंग्स, आई एम सेविंग सम टाइम। आउटपुट करंट यानी आई क्या होगा, रूट मीन कर दिया हमने, रूट मीन स्क्वायर 0 to पाई IM स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डी अल्फा। सॉल्व
ये वाली स्लाइड नेक्स्ट। ये सब तो समझाया हुआ है अब तुम्हें, ठीक है। गुड आफ्टरनून संदीप, ये सब तो समझाया हुआ तुम लोगों ने, अब दोबारा से क्या बताऊं, है ना। यू ऑलरेडी नो what does it mean basically. Whatever the output current we are getting, that output current will be a pulsating DC, and in that pulsating DC you will be having both AC and DC. So whatever AC is there in the pulsating DC, I want to know the RMS value of that particular AC, ठीक है ना। So इसके लिए मैंने डेरिवेशन आपको पिछली क्लास में करवाई थी, the same derivation and the same result, because derivation में कोई फर्क नहीं आएगा ना, just go and see. Total current will be IAC plus IDC, so IAC will be I minus IDC. Integration means the average value formula वो same पूरा वही चलेगा, and you will get the same formula. Copy paste कर लो अगर करनी है तो वो derivation यहाँ पे I RMS square minus IDC square, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। गुड आफ्टरनून शरतानंद, समझ में आ रहा है। I did not do the derivation this time because we have already derived the result, and it doesn't matter whether it is half wave or full wave or what, because we just considered I is equal to IAC plus IDC irrespective of whether it is, you know, half wave rectifier or full wave rectifier. So you just go and open that page, and once you open that page you will see the same derivation basically will be valid over here also. Okay, okay. जो ये वाली स्माइली भेज रहा है, क्या चाहते हो बताओ मुझे, क्या क्या समझ में नहीं आ रहा। यू वांट मी टू डू द होल डेरिवेशन अगेन, व्हाट डू यू वांट मी टू डू। मतलब ये स्माइली क्यों भेज रहे हो, क्या चाहते हो, मतलब स्माइली का तो मतलब ये होता है कि क्या क्या मतलब, है ना, क्या चाहते हो। क्या करोगे अनिमेश, यहां 50 पॉइंट है, 1000 पॉइंट है, तुम लोगों को आगे की क्या पड़ी रहती है, मुझे ये चीज बताओ। इसमें कितने पॉइंट्स है, जितने हैं चुपचाप पढ़ो। तुम लोगों को इतने दिन हो गए अब क्लास स्टार्ट किए हुए, अब सुधर जाओ, ठीक है। कुछ चीजें हैं वो समझो, जो पढ़ा रहा हूं वो चुपचाप पढ़ो। 2 घंटे की क्लास है, 2 घंटे तक तुम्हें पढ़ना है। 2 घंटे में अगर 15 पॉइंट होंगे तो 15 करेंगे, 10 होंगे तो 10 करेंगे। अगर खत्म हो गए कुछ और पढ़ना है तो कुछ और पढ़ेंगे। कुछ नहीं पूछना आगे क्या है, जितना मैं पढ़ा रहा हूं चुपचाप वो पढ़ना है, ठीक है। और दूसरी चीज पेशेंस रखनी है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, पेशेंस रखनी है। अभी देखो कितनी तेज तेज चल रहा है सेंटर टैप, है ना। पिछली बार हाफ वेव रेक्टिफायर में कितना टाइम लगा था 4 पॉइंट्स तक, अभी देखो कितनी तेज तेज हो गए हैं चारों पॉइंट्स, है ना। आज तेज हो रहा है, इसके बाद ब्रिज उड़ता हुआ जाएगा। तो हैव पेशेंस, थिंग्स विल गेट ओवर सून, द गुड टाइम्स विल कम, वी आर एट द एंड ऑफ द टनल, द सिल्वर लाइनिंग सून विल बी देयर। So have some patience, have some patience, है ना। Patience is very important. After this you will have to have patience and filters also. So, you know, be prepared with this kind of a mindset that it is a part of our syllabus and we have to learn it. And trust me, I'm trying my level best to make it as interesting as possible. If you do not trust me, then go and watch the lectures of other people. You will understand what I'm trying to tell you. Simple सी बात है। Coming soon in a lecture near you, in a lecture in your laptop. चलो ठीक है, coming back. तो RMS value of AC component हमें पता लग गया। RMS we have already calculated, IM by root 2. IDC we have already calculated 2IM by pi. We can calculate IRMS dash also. The next point is what? Ripple uncle. The next point is the ripple factor. Ripple factor, I told you, it is R, or you can also denote it by R, but I have a habit of going with this, and the books also you will find this symbol, but please do not confuse this with gamma. ठीक है, याद रखना, याद ले रहा हूं। So ripple factor will be I RMS dash upon IDC, or you can also write it as V RMS dash upon VDC. So from here we can see ripple factor can be written as under root of I RMS dash डायरेक्ट लिख दो। देखो इसकी जगह ये डाल रहा हूं IDC स्क्वायर, कल भी तो किया था मैंने, डायरेक्ट लिख देता हूं। नहीं समझ में आ गया तो बोलना, पूरा लिख दूंगा।
समझ में आया ना? ये आरएमएस डैश यहाँ पे डाला, जब ये यहाँ पे डाला तो आईडीसी अंदर गया तो आईडीसी स्क्वायर ये 1 हो गया। ओके, ये कल भी मतलब करके दिया था। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सो यू कैन सी गामा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई एम आई एम, हाँ 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 कर दिया, वही कह रहे हो ना, यही कह रहे हो ना, हाँ हाँ कर दिया, देख लिया मैंने, देख लिया, ठीक है। गुड आफ्टरनून विशाल, गुड आफ्टरनून सुब्रानू। आई एम बाई रूट 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2im बाई पाई होल स्क्वायर। मैंने अलग से दोनों को अलग अलग कर दिया स्क्वायर को, अदरवाइज यू कैन कंबाइन इट ऑल्सो, कोई बड़ी वो नहीं, मुश्किल बात नहीं है। चलो नेक्स्ट पेज में करते हैं, गंद पड़ जाएगा। सो रिपल फैक्टर इज कमिंग इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये पाई ऊपर गया, पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, तो आई एम स्क्वायर कट चुका है, ये 2 आया, ये 4 आया, तो 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8 माइनस 1। On solving this, gamma should be 0.483. Gamma should be 0.483. चलिए, तो बताइए कि हमारा रिपल फैक्टर कम हुआ कि बढ़ गया? रिपल फैक्टर हैज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड? रिपल फैक्टर हमारा कम हो गया है, हमारा कम हो गया है। थोड़ा कम हुआ है, काफी कम हुआ है? पहले पहले कितना था रिपल फैक्टर? व्हाट वाज द रिपल फैक्टर लास्ट टाइम? Good. Ripple factor was 1.21 last time. Now it has become 0.483. It's a significant improvement. There is a significant improvement. That is now the RMS value of the AC component, or you can simply say the AC component in the pulsating DC is 0.48 times of the DC. तो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, तो ये कहानी लिख देते हैं। For full wave rectifier, RMS AC component is 0.483 times of the DC component, और in other words, क्या कहना चाह रहे हैं दूसरे शब्दों में, और in other words, full wave rectifier has smaller AC component than the DC component. Smaller AC component than the DC component. Okay, so this was a ripple factor. Now the ripple factor is 0.483. Next, after ripple factor, we are moving to our sixth point. You already know what is the sixth point. That is form factor. चलिए, सो नेक्स्ट हम चल रहे हैं फॉर्म फैक्टर पे। फॉर्म फैक्टर पे। सो यू नो दैट फॉर्म फैक्टर will be for you because you are late. But I think there must have been some unavoidable circumstances because of which you got late for the class. But this is what we have already covered, so watch it in the recorded. You can continue from here because it is linked to the yesterday's class, so no problem. We started. Hope there must have been unavoidable reasons because of which you people got late in the class, because
there is nothing more important presently in your life than your career and your studies. Because if in case you will not get selected in the GATE exam or in the IES, or you do not get any job, basically, God forbid, I shouldn't say that. So, have you ever thought about what your life will be and what you will be doing in the future? I think you will be again doing the preparation next year and next year and next year till you get a job, till you get a job. So that's why get serious about your studies, prioritize things in your life. In your life, you have to prioritize things. मैं वीडियो भी डल जाएगा, शाम तक वीडियो डल जाएगा बेटा, मुझे सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है. So you have to prioritize things in your life. You have to, अभी डाल दूंगा वीडियो थोड़ी देर में, पढ़ ले भाई, अभी अभी सुन ले जो मैं बोल रहा हूँ, डाल दूंगा वीडियो, कोई चैट में कुछ नहीं लिखेगा अभी, मेरी बात सुनो. अभी मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ बेटा, तुम्हें ये चीजें भी समझ में नहीं आएंगी. You will understand all these things जब समय हाथ से निकल गया होगा. You need to prioritize things in your life. For you, priority should be there. For example, for me, what is my priority? My priority is my family. After that, my job, my career, because that is linked with the lives of a lot of students. Because if I am not honest with my profession, then it's going to hamper the life of a lot of students, basically. So for me, my second priority is my profession. So that's why you have to prioritize things. What is what and what is what. That's what you need to do. इसलिए सीरियस हो जाओ, पढ़ाई सबसे ऊपर, सर्वोपरि, बाकी सब कार्य उसके नीचे. क्योंकि एक बार सिलेक्ट हो गए तो आगे आने वाले तुम्हारे 60, 70, 80 साल तुम्हें थैंक यू बोलेंगे. और अगर तुम सिलेक्ट नहीं हुए तो तुम ही जो आगे आने वाले हो, वो आज वाले अपने आप को हर दिन कोसोगे. ये चीज मेरी बात याद रखना. पता नहीं समझ में आई कि नहीं आई. जिसको आ गई तुम समझदार हो, जिसको नहीं आई समय तुम्हें जरूर समझाएगा मैं क्या कहना चाह रहा था. ठीक है. सो कमिंग बैक टू फॉर्म फैक्टर. Form factor, basically we studied last time, form factor is IRMS upon IDC. What is IRMS? We calculated it. IRMS is IM by root 2. What is IDC? 2IM by pi. So calculating it, form factor is 1.11. लो भाई, form factor भी आ गया. What was the form factor last time? What was the form factor last time? Good, shabash, shabash. It was 1.57. The form factor has got reduced. If the form factor has got reduced, can you tell me what will happen to the smoothness of the waveform? Will the waveform will be smoother this time? Smoothness increases. Smoothness increases. Good. So we can write that. Therefore, full wave rectifier output waveform is smoother than the half wave rectifier output waveform. Okay, चलिए 7th point. Average diode voltage, जिसको मैं VD एवरेज लिख रहा हूं, या V डायोड एवरेज भी लिख सकते हैं, या फिर DC डायोड वोल्टेज. चलिए निकालते हैं. So I will be taking only one diode into consideration. ठीक है, मैं एक डायोड के लिए निकालूंगा, अगले डायोड का रिजल्ट लिख दूंगा, बट दैट यू कैन डू ऑन योर ओन. पीआई भी दोनों में सेम आएगी, रिजल्ट ऐसे आएंगे. ठीक है, बिकॉज फॉर पीआई आई एम डूइंग इट. So for one diode I'm doing the analysis. The second diode analysis you can do on your own, because the analysis is absolutely same for both the diodes. Okay, so I'm considering diode D1, the diode which was on the top. So I'm considering diode D1. So consider diode D1. Fine. Let's start with first half cycle, alpha 0 to pi. When alpha is 0 to pi, you know that diode 1 is forward biased
and diode 2 is reverse biased. For my analysis purpose, this time I'm considering it as short. So I don't want to consider it short. It's okay. I told you. Now you can do the analysis even if it's not short. You know how to do it. I have explained everything. Okay. So this is short. Let it be over here. This is V naught I. Okay. Let it be here only. And this is the voltage across the diode. Okay. Plus minus VD. Diode voltage. Okay. P side, anode side I've taken plus, cathode side I've taken minus. Normally, this is what we do. So now if you see, the diode voltage is approximately 0. It is 0. फिर कल वाला कोई बोलेगा सर इक्वल टू आ रही है सर देखो शॉर्ट है भाई इक्वल टू आ रही है मैं मान रहा हूं मैं वैसे ही अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूं that if I have taken the approximation that RF is 0, I have taken the approximation that secondary winding resistance is not there, and a lot of approximations I've taken. That's why I'm writing it approximately. But yes, taking the present circuit into consideration, VD is exactly equal to 0. Do not fight with me. Okay. But sir, what if I had taken RF into consideration? If I had taken RF into consideration, can't you do that on your own? अगर मैं RF consideration लूंगा तो क्या आप खुद नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं? क्विकली टेल मी व्हाट विल बी वीडी. मतलब लिख नहीं पाओगे यहां पे इतना बड़ा, पर अपने नोट्स में करो, खुद रफ में करो. व्हाट विल बी वीडी इफ आरएफ इज टेकन इनटू कंसीडरेशन? इफ आई टेक आरएफ इनटू कंसीडरेशन, व्हाट विल बी वीडी? आई वांट टू नो. ओके, लेट मी ड्रॉ द सर्किट. दिस इज द सर्किट सो दैट इट इजी. मैं इसको ब्रैकेट में डाल रहा हूं, मतलब दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ अवर डिस्कशन. ये एक्स्ट्रा ऐसे समझा रहा हूं मैं बस. व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल बी वीडी? Once you're done with the answer, just write done. Okay. I know you can't type that such a whole expression. Just write done. Okay. Good, good. You can see the diode voltage will be, this is the path. This is the path, beta. Just use voltage division rule, that's it. Or find the current and multiply it with RF. Because it is nothing but just a half wave rectifier. And that is what we did in the half wave rectifier also. What you have right now in front of you is a half wave rectifier. I told you yesterday, it consists of two half wave rectifiers. In one half cycle, I'm using one half wave rectifier. In the second half cycle, I'm using another half wave rectifier. So by combining two half wave rectifiers, I have achieved the full wave rectifier. But that has a disadvantage, that a center tap transformer got introduced. That is a big disadvantage that I'm facing over here. I wanted to remove center tap transformer. I thought if somehow I can remove center tap transformer, then this circuit will be better. But I can't do that, because if I do so, how I will get the inversion of the voltage? Okay, so that is the problem actually I face, and that's why I introduced a center tap transformer. Later we will discuss upon it. You know, in greater length we will go about this later on. So now V diode will be equal to VA. VA is Vm sin alpha divided by RF plus RL multiplied by RF. लो भाई आ गया आपका. तो मैं आपको वही कह रहा हूं कि बेटा अब मैं आपको सर्किट एनालिसिस सिखा चुका हूं. वो दे नहीं दे कुछ भी दे हम मैनेज कर लेंगे, पर मैं आपको जनरल केसेस करवाता हूं. जैसे एवरेज डायोड वोल्टेज के लिए हम यही वाला केस लेते हैं, क्योंकि हमें पीक इनवर्स वोल्टेज निकालनी होती है. तो पीक इनवर्स वोल्टेज हम आइडियल केस के लिए निकालते हैं हमेशा. ठीक है ना. तो मैंने आपको बोला ना कि जब भी मैं एनालिसिस कर रहा हूं, जो मैं कभी मैं आरएफ ले रहा हूं, कभी मैं आरएफ नहीं ले रहा हूं, कभी मैं वी गामा ले रहा हूं, कभी मैं वी गामा नहीं ले रहा हूं. क्यों? क्योंकि आपको यही मेन केसेस हैं जो आने वाले हैं. इसके अलावा नहीं आएगा. इस केस में वो नहीं देगा आपको आरएफ. मुझे पता है वो नहीं देने वाला. एवरेज डायोड वोल्टेज में आरएफ मुझे पता है वो नहीं देगा. आई नो दिस थिंग. क्यों? मुझे पता है वो पीक इनवर्स वोल्टेज निकालनी है. ठीक है ना. सो दैट्स व्हाई
जो मैं करवा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, पर अगर आ गया तो आपको करना आना चाहिए, बस सिंपल सी बात ये है। मूविंग टू द नेक्स्ट हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल हो गया, नेक्स्ट हाफ साइकिल अल्फा बिटवीन पाई एंड 2 पाई। इस समय आपको पता है कि डायोड 1 ऊपर वाला रिवर्स बायस है, नीचे वाला फॉरवर्ड बायस्ड है। सर ये वाला क्यों लिया? क्योंकि अब सिर्फ डायोड 1 के लिए एनालिसिस हो रहा है, याद रखना मैं सिर्फ डायोड 1 के लिए कर रहा हूं, तो एक कंप्लीट साइकिल में डायोड 1 के लिए क्या बिहेवियर है, समझ रहे हो? क्योंकि मुझे क्या निकालना है, एवरेज डायोड वोल्टेज। सो अ पर्टिकुलर डायोड एवरेज वोल्टेज आई एम इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग, सो आई एम टेकिंग अ पर्टिकुलर डायोड इनटू कंसीडरेशन। ओके, तो डायोड 1 ही ले रहा हूं मैं, फिर इसलिए वीडी यही लिखा है। So now I want to know what is VD. Now I want to know what is VD. So what I'm going to do, I'm going to apply the KVL in this loop. Okay, मैं इस लूप में KVL अप्लाई कर रहा हूं। So you can see minus VD plus VA minus VB is equal to 0, or the voltage of the diode is coming as VA minus VB. Let's substitute the value of VA and VB. So V diode is equal to VA is VM sin alpha minus VB is minus VM sin alpha, याद है क्या लिखवाया हुआ है, आज भी यूज किया है। So diode voltage is coming as 2 VM sin alpha. Therefore, the diode voltage is coming as 0 when alpha is from 0 to pi and 2 VM sin alpha when alpha is from pi to 2 pi. This is what? This is instantaneous diode voltage. क्योंकि this is a function of time. You can choose the time instant and get the value of the diode at that time. This is instantaneous diode voltage. So let me draw the waveform for the instantaneous diode voltage. Next page में बनाते हैं साफ साफ। So 0 to pi, it is 0. From pi to 2 pi, it is minus, it is 2 Vm sin alpha from pi to 2 pi. So obviously, if angle is pi to 2 pi, sin alpha is negative. So that's why it is downwards. Okay. थोड़ा सा इस साइड लंबा हो गया, चलो कोई नहीं, मैनेज कर लेंगे। सो द नेगेटिव मैक्सिमा इज minus 2 Vm from pi to 2 pi and then 2 pi to 3 pi कुछ नहीं होगा, 3 pi to 4 pi again, this is 0. This is the diode voltage. बोलो भैया, सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया इंस्टेंटेनियस प्लॉट? तो ये हमारे पास डायोड की वोल्टेज आ गई, डायोड की वोल्टेज आ गई। अब मतलब ऑलरेडी मुझे पता है, मतलब आप मैं लिख के देने वाला हूं, मैं लिख के देने वाला हूं, तो तुमने एक चीज नोटिस करी कि डायोड की रिवर्स बायस के टाइम पीक वोल्टेज, देखो दिस इज अ रिवर्स बायस कंडीशन,
This is the reverse bias condition. During the reverse bias condition, the peak voltage that is appearing across the diode is 2 Vm. That is peak inverse voltage. मैं लिखूंगा, मैं पहले ही समझा दे रहा हूं. That is peak inverse voltage. So peak inverse voltage of the diode is 2 Vm. What was the peak inverse voltage of the diode the last time in the half wave rectifier? Vm. So what do you think? What do you think that is it a good thing that PIV is 2 Vm instead of Vm, or it's a bad thing? It's a good thing or it's a bad thing? It's a bad thing. It's a bad thing because if you know that my breakdown voltage should be greater than the peak inverse voltage. So last time I was supposed to design a diode whose whose breakdown voltage was greater than Vm. But now I'll have to design a diode whose breakdown voltage should be greater than 2 Vm. So I need a diode with a greater breakdown voltage. It means I'll be having a costlier diode now. That's why it is not a good thing. It is not a good thing. So a negative aspect has come into picture, that the breakdown voltage has got increased because PIV rating got increased. ठीक है बेटा, समझ में आया? समझ में आया बेटा? ठीक है. So now what I am doing right now, I have calculated the instantaneous diode voltage. Why I did so? Because I wanted the average voltage. So let's calculate the average voltage. So V diode DC will be, time period is 2 pi, integral 0 to 2 pi, instantaneous voltage of the diode D alpha. Let's substitute the value 1 by 2 pi, split the limits. वैसे तो फायदा नहीं है. 0 to pi 0 है, 0 to pi 0 D alpha plus integral pi to 2 pi 2 Vm sin alpha D alpha. और प्लीज ध्यान देखना बच्चे, क्या अक्सर गलती करते थे मेंस के पेपर में, बता रहा हूं तुम्हें, जो मॉक टेस्ट मेंस का होता था, and then they used to come to me to discuss things and all that. So normally I saw 2-3 times, I saw their sheets and I saw the mistake that they have done. From pi to 2 pi they take minus 2 Vm sin alpha, क्योंकि नेगेटिव है ना ये, minus 2 Vm sin alpha है. ऐसा मत करना, because pi to 2 pi is already taking care of the negative portion. The angle pi to 2 pi in sin alpha is already negative, so negative is already taken care of. You just have to put this value from pi to 2 pi 2 Vm sin alpha. Negative मत लिख देना यहाँ पे, negative मत लिख देना यहाँ पे, ध्यान रखना इस चीज का. And now when you solve it, अब जब आप इसको solve करेंगे, so V diode DC, बेटा ये half wave rectified है, Vm by pi is the answer. What is Vm? 2 Vm minus 2 Vm मतलब peak value. मतलब इसको सॉल्व कर लेना, नहीं तो minus 2 Vm by pi. This is my DC value of the voltage across the diode. Okay, okay. अब आपका होमवर्क है, अब आपको डायोड D2, मैंने क्या किया, D1 के लिए किया, आप D2 के लिए करेंगे. एंड व्हेन यू विल डू सो, V diode will be minus 2 Vm sin alpha. Alpha is 0 to pi and 0 when alpha is pi to 2 pi. Do the analysis and check whether I have written the correct values or not. क्यों? मेमोरी है, भूल जाते हैं, है ना? क्या पता मैं भूल गया हूं, मैंने गलत लिख दिया हो. Never know. So you have to confirm whether I have written it correctly or incorrectly. So we are done with, I think, our 7 points. 7 points. Moving to the 8th point. Peak inverse voltage, PIV, or peak reverse voltage.
तो इसके बारे में चर्चा हो गई है ऑलरेडी, लिख दूं सीधा। पीआईवी क्या होता है? डायोड की मैक्सिमम वोल्टेज कब? इन रिवर्स बायस कंडीशन, दैट इज mod of 2Vm sin alpha maximum, and it will be when reverse bias. So alpha is from pi to 2 pi. I am writing it for diode D1, ठीक है। क्योंकि मैंने डायोड D1 लिया इसलिए मैं D1 के लिए चल रहा हूं, D1 के लिए चल रहा हूं तो मैं ये लिख रहा हूं, ये वाला केस ले रहा हूं मैं, ये वाला केस। तुम डायोड D2 के लिए चलते तो फिर तुम ये वाला केस लेते, है ना। बात आंसर सेम आने वाला है, रिवर्स बायस के टाइम देखना है। So from here you can see peak inverse voltage is equal to 2 times Vm. PI भी बढ़ गया सेंटर टैप के केस में। तो अब मैं लिख देता हूं वही चीज कि अगर PIV बढ़ गया तो मुझे हायर ब्रेकडाउन वोल्टेजेस चाहिए, जिसके लिए डायोड एक्सपेंसिव हो जाएगा और डायोड बड़ा भी हो जाएगा, साइज भी तो बढ़ेगा उस बेचारे का। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपको लिख देता हूं जो मैंने आपको समझाया था। विद the increase in PIV circuit needs diodes having higher breakdown voltages which are expensive और क्या होगा, and bigger in size. Therefore greater PIV is undesirable. In rectifier circuits. So this was peak inverse voltage. Moving to the next case. Ninth, efficiency. Wait, sorry, लीजिए भैया, तब से मैं पानी पी लेता हूँ। So कल हमने देखा था the percentage efficiency will be DC output power upon the input power into 100, यही था एफिशिएंसी। तो अब मैं आपको डेफिनेशंस नहीं लिख के दे रहा हूं, अब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं एफिशिएंसी का मतलब क्या है, क्या पता लगता है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन ऑल दिस थिंग्स इन द यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडेज क्लास, सो वी ऑलरेडी नो ऑल दिस थिंग्स। So PDC upon P input into 100. So now the first thing is I need the input power. If you want me to do the derivation, I can do that. It's not a big deal for me. But I'm saying that why to waste time in the derivation? I hope you can quickly understand this thing, that the input power will be I RMS square into RF plus RL, जैसे मैंने उस दिन समझाया था आपको। बेसिकली क्या होगा, इमेजिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जस्ट ओपन द सर्किट ऑफ द सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर दैट आई ड्रू यस्टरडे। ओके, यू कैन ओपन दैट एंड जस्ट सी इन द फर्स्ट हाफ साइकिल द करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू द डायोड D1. Okay, in the first half cycle the current will be flowing through the diode D1, okay, for the first half cycle, okay, and its RMS value will be IRMS for the first half cycle, let's say, and it's going to diode D1. In the second half cycle it will be going to the diode D2,
and the resistances which will be encountered in both the half cycles will be RF plus RL. So the current will be flowing through RF and RL for the complete cycle. So it will be IRMS square into RF plus RL. And IRMS will be IM by root 2. And IRMS will be IM by root 2 because it is for a complete cycle. Got it? नहीं आया तो मैं प्रूव कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी डेरिवेशन पूरी निपटा दूंगा 2 मिनट में. बोलो समझ में आया कि डेरिवेशन करूं? समझ में आया है ना? समझ में आया. So now ये इनपुट पावर आ गई. Therefore the efficiency will be DC पावर क्या होगा बेटा? कल भी देखा था IDC स्क्वायर इंटू RL. आउटपुट डीसी पावर मतलब जितनी डीसी करंट जा रही है मेरे लोड में से इंटू मल्टीप्लाइड बाय द लोड रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय IRMS स्क्वायर RF plus RL into 100. Let's substitute the values. DC कितना है? 2IM by pi. लोड की डीसी करंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं स्टार्टिंग में क्लास की. आज सेकंड पॉइंट जो किया था, डिवाइडेड बाय IRMS IM by रूट 2, ये भी निकाल चुके हैं हम लोग. अब काटपाट होगी इसमें. ये सब सॉल्व करने के बाद यू जस्ट गो फॉर दिस कैलकुलेशन. बेसिकली व्हेन यू विल बी डन विद द कैलकुलेशन, द आंसर विल बी 81 into RL upon RF plus RL. Okay, just calculate it. देखना यही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है. This is what you will be getting. This is what you will be getting. So you can see maximum percentage efficiency will be 81%. Maximum percentage efficiency कब होगी? 81% कब? When diodes are ideal. मतलब RF 0. So when RF is 0, obviously these two will get cancelled and the maximum efficiency will be 81%. It will be 81%. Okay. So can you tell me what was the efficiency last time? What was the याद है? आधी है, आधी है, आधी है ना? होनी भी है. क्यों? आधे के लिए काम कर रही थी. अभी तो यहां आधे आधे 2 रेक्टिफायर लगाए. आधा ही काम करता था तो दोनों के आधी ही आएगी एफिशिएंसी, है ना? दोनों के आधी आएगी एफिशिएंसी. लॉजिकल भी. So now full wave rectifier has better efficiency than the half wave rectifier, that is conversion of input power to DC power is better in full wave rectifier. Okay. Let's move on to the next point. 9 points हो गए होंगे, 9 हो गए ना. Let's move on to the 10th point. Regulation factor. Percentage regulation is equal to what? Percentage regulation किसके बराबर होता है? It is VDC no load minus VDC full load upon
VDC full load into 100 तो पता ही है हमें, कोई नई चीज तो है नहीं है, ठीक है। ये तो लास्ट टाइम भी देखा था हम लोगों ने परसेंटेज रेगुलेशन। चलो निकालें VDC नो लोड और VDC फुल लोड। सो पहले फर्स्ट वी आर गोइंग फॉर VDC नो लोड। स्पीड ठीक है, ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा हूं, स्पीड ठीक है ना? ठीक है। ओके बेटा, तो ये VDC नो लोड है, इसका मतलब IDC कितना है यहां से? IDC इज जीरो, IDC इज जीरो, क्योंकि नो लोड मतलब RL टेंडिंग टू इंफिनिटी, हेंस द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज जीरो। एज यू रिमेंबर लास्ट टाइम ऑल्सो आई टोल्ड यू, अब जल्दी जल्दी कर देता हूं, मुझे डीसी निकालना है तो मैं सारी डीसी वोल्टेजेस उठा लेता हूं, मैं सारी डीसी वोल्टेजेस उठा लेता हूं। डीसी सेकेंडरी वाइंडिंग के क्रॉस कितनी आएगी? जीरो। इसके क्रॉस डायोड की डीसी, तो ये सारा डीसी आ गया। सो लेट्स अप्लाई द KVL इन दिस लूप। लेट्स अप्लाई द KVL इन दिस लूप, जो ये वाला लूप है इसमें KVL लगाते हैं। सो VDC नो लोड मतलब क्या हुआ कि डीसी वैल्यू जब IDC जीरो है या फिर RL इंफिनिटी है। सो KVL लगाया मैंने, नीचे से ऊपर गए, -0, फिर डायोड आया V डायोड DC, फिर लोड आया VDC नो लोड इज इक्वल टू जीरो, यानी कि VDC नो लोड is coming as minus V diode DC. V diode DC we just calculated minus 2 Vm by pi. Hence, VDC no load is coming as 2 Vm by pi. Is coming as 2 Vm by pi. ठीक है, VDC नो लोड निपटा। अब मुझे क्या निकालना है? VDC फुल लोड। सेम वही लॉजिक जो लास्ट टाइम किया था हम लोगों ने, उसके लिए भी। सेकेंड, VDC full load. So you can see VDC full load will be
VDC कब? जब IDC जो है वो 0 नहीं है या फिर RL इंफिनिटी नहीं है। तो दो फॉर्मूले लिखे थे मैंने, इस बार सेम वैसी डेरिवेशन है, बिल्कुल सेम वैसे ही है, जो स्टेप्स थे सेम वैसे ही है। VDC full load will be the DC current through the load into RL, ऑब्वियस ही बात है, दिस विल गिव यू VDC full load, है ना। फिर हमने एक और तरीके से लिखा था, हमने कहा था या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं, VDC full load हो जाएगा VDC नो लोड, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो इंटरनल DC वोल्टेज ड्रॉप। So you can see VDC full load will be VDC no load minus IDC into R, where R will be diode resistance plus half of the secondary winding resistance, क्योंकि हाफ में से गुजर रहा है। बोलो, समझ में आया इतना सबको? आई होप क्लियर है, आई होप क्लियर है, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी percentage regulation that we are calculating will be VDC no load, कितना आया 2 VM by pi, माइनस VDC फुल लोड यानी VDC नो लोड माइनस इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप डिवाइडेड बाय VDC फुल लोड, इसको मैं लिख रहा हूं IDC इंटू R L इंटू 100। ये कट गया, ये कट गया। ऑन सॉल्विंग इट, लास्ट टाइम भी यही फॉर्मूला आया था क्या, ये डिफरेंट फॉर्मूला था? सेम आया था, गुड। द ओनली डिफरेंस नाउ इज इन द वैल्यू ऑफ R। पिछली बार R था RF प्लस RSW, इस बार RSW बाई 2 है, बस। दिस इज द ओनली डिफरेंस, दिस इज द ओनली डिफरेंस, ठीक है। बाकी फॉर्मूला इज एब्सोल्युटली सेम, फॉर्मूला इज एब्सोल्युटली सेम, फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही आया जैसे लास्ट टाइम आया, जैसे लास्ट टाइम आया। ओके, दोबारा से वही कहानी, IDC बढ़ेगा तो VDC फुल लोड। फुल लोड में सर RL को 0 क्यों नहीं मानते? फुल लोड में फुल लोड का मतलब RL 0 होता है। मतलब अगर तुमने फुल लोड लगा के काम कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है तुमने वहां पे कोई लोड लगाया हुआ है। Whatever load you have connected, that is full load. Whatever load you have connected, that is full load. बट डिपेंड कर रहा है तुम किस पे काम कर रहे हो भाई, तुम्हें 0 पे थोड़ी ना काम करवाना है। Because when you will connect something, that load will be the full load at that time. तुमने शॉर्ट कर दिया, तुम RL को 0 ले लो। तुमने शॉर्ट कर दिया, तुम RL को 0 ले लो। वो तो डिपेंड करेगा तुमने वहां पे लोड क्या लगाया। अब तुमने जो लोड लगाया उसके हिसाब से ये RL आएगा, जो लोड कनेक्ट किया हुआ उस समय वहां पे। चलिए नेक्स्ट, यहां पे जगह है, यहां फिट करने की कोशिश करते हैं। सो नाउ यू सी चलो लिख देता हूं, सीधा लिख देता हूं। देखो बेटा, IDC कितना आएगा? IDC विल बी 2 IM by pi, that is 2 times IM will be VM upon, इसका पाई तो रहेगा ही रहेगा, VM अपॉन RF प्लस RL प्लस RSW बाई 2। वो लास्ट वाला जो लास्ट टाइम पॉइंट था वही पॉइंट सेम करवा रहा हूं, ठीक है। तो ये आपके पास IDC निकल के आएगा। नाउ इफ यू नोटिस वन थिंग, जब मेरा RL घटेगा, लोड में वेरिएशन आएगी, तो यहां से मैं VDC फुल लोड के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, यहां से करेंगे बात हम।
आरएल कम होगा, ठीक है, यहां से कर रहा हूं जैसे कल बताया था, तो आईडीसी बढ़ेगा, आईडीसी बढ़ेगा तो इंटरनल डीसी वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा। अगर इंटरनल डीसी वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा सो वी डीसी फुल लोड घटेगा, देयरफॉर डीसी आउटपुट वोल्टेज varies, therefore DC output voltage varies inversely with load current. with load current, ठीक है, तो यहां तक हमने खत्म कर दिया हमारा रेगुलेशन फैक्टर। नेक्स्ट पॉइंट इज, यहां से वी कैन इजीली गो फॉर, ठीक है, VDC नोड की वैल्यू डाल देंगे, यहां से वी कैन गो फॉर द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है, कर लो, कॉपी कर लो, यहां से हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट जो है बना पाएंगे। कितने पॉइंट हुए? 11। सो VDC फुल लोड कितना है? VDC नो लोड कितना है? नो लोड 2 Vm/pi माइनस इंटरनल वोल्टेज DC वोल्टेज ड्रॉप IDC इंटू R। तो ये बिल्कुल कल जैसा है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी लिख दिया, इसमें कुछ समझाने को है नहीं क्योंकि कल पूरा समझा चुका हूं मैं आपको ये चीज, तो देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन इन दिस। ओके, नेक्स्ट 12th पॉइंट, व्हाट इज द 12th पॉइंट? फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट और रिपल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट और रिपल फ्रीक्वेंसी। सो लेट्स गो फॉर द 12th पॉइंट। फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट और रिपल फ्रीक्वेंसी, ओके।
ये इनपुट वेव फॉर्म है, ये रेक्टिफायर की जो आउटपुट है उसकी वेव फॉर्म है. सो यू कैन सी इनपुट, हाफ साइकिल, फुल साइकिल एंड सो ऑन. ये हाफ साइकिल, full cycle. So now if you see, ripple frequency is the frequency of the output waveform, and if the input has a frequency of f naught, then the output has double the frequency of the input. Ripple frequency is 2f naught. Ripple frequency is 2f naught. So remember this point. In case of a full wave rectifier, the ripple frequency is 2f naught. Now you can see again the output is not a pure sinusoid, so obviously, and moreover it is periodic, so it will be having Fourier series expansion. So the Fourier series expansion is like this. Output can also be represented by using Fourier series as V naught DC component 2 Vm by pi minus 4 Vm by pi summation k even cos of k omega naught t upon k plus 1 into k minus 1 ओके. ये आया हमारे पास फोरियर सीरीज एक्सपेंशन इन विच यू कैन सी this is our DC component. This is our DC component. And this is our AC component. This is our AC component. Clear हो गया? So now if you see, the AC component has only even harmonics. AC component में देखोगे सिर्फ even है. मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर में ओमेगा नॉट एन इवन था, इसमें खाली इवन है, ओमेगा नॉट मिसिंग है. तो जब आपको फिल्टरिंग करनी होती है, फ्रीक्वेंसीज की फिल्टर करना होता है. अब इसके बाद क्या लगेगा, स्टेजेस याद है ना, ट्रांसफॉर्मर, रेक्टिफायर एंड फिल्टर. अब जब आपको फिल्टर करना होगा तो फिल्टर करना फुल वेव रेक्टिफायर को आसान है एज कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि ओमेगा नॉट एक फ्रीक्वेंसी कम हो गई है. तो उस एक फ्रीक्वेंसी की मुझे फिल्ट्रेशन नहीं करनी, मुझे खाली 2 ओमेगा नॉट से इवन फ्रीक्वेंसीज को करना है. ओके, चलो पहले इतना लिखते हैं फिर बताता हूं. AC component has even harmonics or frequencies 2 omega naught, 4 omega naught, 6 omega naught, so on. Next, output of full wave rectifier does not have fundamental frequency omega naught due to which
filtering process becomes easier. Output filtering does not. ठीक है. Now, अब बेटा अगर मैं हायर हार्मोनिक्स निग्लेक्ट कर दूं, क्योंकि मैक्सिमम पावर लोअर हार्मोनिक्स में ही होती है, यानी कि फंडामेंटल में सबसे ज्यादा होती है. सिग्नल सिस्टम में ये पूरा समझाया हुआ है आपको. इफ हायर हार्मोनिक्स आर निग्लेक्टेड, तो वी आउटपुट कितना आया? 2 Vm by pi minus 4 Vm by 3 pi cos of 2 omega naught t. So from this equation, can you see full wave rectifier is basically a combination of a DC and a AC source in series? तो मैं एक फुल वेव रेक्टिफायर को अप्रोक्सीमेटली ऐसे भी बना सकता हूं. चलो मैं लिख देता हूं. फ्रॉम द अबव इक्वेशन, we can observe that from the above equation we can observe that the full wave rectifier is equivalent to a series connection of a DC source and an AC source. Good afternoon, Archit. कोई बात नहीं Archit, I can understand. If you're working and this, timing is also clashing with the job timings or the college timing, so cover it in the recorded, no problem. But cover it in the recorded every day, so that you don't have a lot of pending lectures to watch. उसमें क्या यहाँ से आउटपुट आया. So you can see there's a DC. ये मतलब फुल वेव रेक्टिफायर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. ये DC आ गया एंड AC minus 4 Vm upon 3 pi cos of 2 omega naught t. और ये क्या है यहाँ पे जो रिप्रेजेंट हो रहा है? दिस इज V नॉट. दिस इज V नॉट. ठीक है. सो वी आर डन विद अवर 12th पॉइंट. नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 more पॉइंट्स. 2 और पॉइंट्स बचे. नेक्स्ट इज एंगल ऑफ कंडक्शन. नेक्स्ट इज एंगल ऑफ कंडक्शन. नेक्स्ट पेज में करते हैं साफ साफ.
अगर डायोड्स आइडियल हैं तो हर कोई डायोड कंडक्ट करेगा 180 डिग्री के लिए, तो ओवरऑल कंडक्शन एंगल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री कल की तरह, क्योंकि इस बार तो पूरा ही चलेंगे ना, एक 180 है 180 है, मतलब हाफ वेव के दोनों कंबाइन, दो हाफ वेव 180 180 360। अब अगर कट इन वोल्टेज वी गामा हुई, अगर कट इन वोल्टेज वी गामा हुई तो सेम वही हाफ वेव रेक्टिफायर का कितना था 180 माइनस 2 थीटा, दो बार होगा 180 माइनस 2 थीटा 180 माइनस 2 थीटा यानी 360 माइनस 4 थीटा, यानी 360 माइनस 4 थीटा। थीटा कितना होगा? वो तो सेम वही जो कल था, क्योंकि थीटा हाफ वेव रेक्टिफायर से निकालोगे यानी साइन इनवर्स ऑफ वी गामा बाई वीएम, करके देख लो सेम वही आएगा। ठीक है, इसको एनसी सेम वही आएगा, बस मैं लिख के दे रहा हूं, बस मैं लिख के दे रहा हूं। इफ diodes are ideal, then each diode if diodes are ideal, then each diode will conduct for 180 degree. Therefore, overall conducting angle will be 360 degrees. ठीक है, next point, if diodes have cut-in voltage V gamma, each diode if diodes have cut-in voltage V gamma, each diode will conduct for 180 degree minus 2 theta. Therefore, overall conduction angle will be 360 degree minus 4 theta. That is, theta will be sine inverse of V gamma upon Vm. V gamma upon Vm. Next we have tough. Last point. Transformer utilization factor. ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर टफ। ठीक है, तो ये निकालते हैं। So now, transformer utilization factor secondary winding will be DC output power divided by AC rating of secondary winding. Okay, I found this on the web for rating on. चलिए चलिए,
सीरी एक्टिवेट हो गई, सीरी एक्टिवेट हो गई, कुछ सुन लिया सीरी ने, ठीक है। चलो, एसी रेटिंग ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, एसी रेटिंग ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग क्या है? एसी रेटिंग ऑफ अपर हाफ प्लस एसी रेटिंग ऑफ लोअर हाफ। ठीक है, पहले हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर निकाल रहे हैं सेकेंडरी वाइंडिंग का। तो ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या था? डीसी आउटपुट पावर अपॉन द इनपुट पावर, जो कि ट्रांसफॉर्मर से आ रही है, सो सेकेंडरी वाइंडिंग से जो आ रही है। अब लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग में एक हाफ साइकिल में ऊपर वाली सेकेंडरी वाइंडिंग चलती है, दूसरे हाफ साइकिल में नीचे वाली सेकेंडरी वाइंडिंग पावर देती है। ऐसा ही था, ऐसा ही था। ओके, ये मैंने बस सेकेंडरी वाइंडिंग आपको थोड़ी सी दिखाई है। इफ यू सी, जो ऊपर वाला हाफ है सेकेंडरी वाइंडिंग का, इसमें जो आपकी वोल्टेज है वो प्लस वीएम साइन अल्फा थी, और जो नीचे वाला हाफ है उसमें वोल्टेज माइनस वीएम साइन अल्फा थी। ठीक है, ठीक है। और ऊपर वाले हाफ में करंट क्या थी? ऊपर वाले हाफ में, वाइंडिंग की बात कर रहा हूं, वाइंडिंग में से करंट क्या है? इफ यू सी, वाइंडिंग में करंट 0 टू पाई आई एम साइन अल्फा है, और पाई टू 2 पाई जीरो है, पाई टू 2 पाई जीरो है। देखो, पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहां से करंट जाती थी, नेगेटिव हाफ साइकिल में यहां से जाती थी। नेगेटिव हाफ साइकिल में ये ओपन होता था, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये ओपन होता था। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कॉमन लिख देता हूं, ऊपर करंट लिख देता हूं, ये करंट वेव फॉर्म्स है, ये वोल्टेज वेव फॉर्म्स है। यहां तक आई थिंक सबको समझ में आया होगा, यहां तक आई थिंक सबको समझ में आया होगा। पर सर ये कर क्यों रहे हो, क्यों इतना तामझाम कर रहे हो? बिकॉज तुम्हें ये समझाना है भैया। डायरेक्ट लिख दूं अगर ये ना बना के तुम्हें समझाता, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था। नाउ इफ यू सी दिस रेटिंग, दिस विल बी इक्वल टू, so this will be equal to, what is AC rating of the upper half? RMS वैल्यू कितनी है वोल्टेज की? Vm by root 2, because VRMS into IRMS, into करंट की RMS वैल्यू कितनी है? Im by 2, प्लस इसकी RMS वैल्यू Vm by root 2 into current Im by 2. So can you see this is coming as Vm Im by root 2? ठीक है, Vm by root 2 कॉमन ले लिया, Im बचा, Vm Im by root 2। ठीक है, सही।
ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया, ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया। बोलो सही है? चलो डाल दे फॉर्मूले में, डालो इसमें। सो TUF of secondary winding will be IDC square into RL अपॉन सेकेंडरी वाइंडिंग, तो अभी निकाला VM IM by √2, IDC that is 2IM by pi square into RL divided by VM. What will be VM? VM will be IM into RF plus RL. अभी पीछे बताया था, इसके लिए भी VM IM into RF plus RL, इसके लिए भी VM IM into RF plus RL, तो टोटल आ जाएगा IM into RF plus RL. So IM square RF plus RL divided by 2, divided by √2 भी गलत जाता, divided by √2. So TUF of secondary winding, it is coming as 4, नीचे से √2 गया, 4√2 पाई स्क्वायर बचा डिनोमिनेटर में, ऊपर RL नीचे RF plus RL, and if you solve it, transformer utilization factor for secondary winding, it is coming as 0.57 RL upon RF plus RL. ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया सबको? So Chitran, you will not find even a single resource. Go and search. Whatever questions I have done in the class, you will not find it in Boylston or any book that you can think of. Basically, just made Boylston, or you can go to Neiman, Millman. You will not find the questions over there. That is a problem with analog electronics, I told you. But PYQs you can do. That I'll be dealing with very soon. All the PYQs. So if you are so much enthusiastic, you can do the PYQs on your own. But the problem is that in the PYQ, the diode questions will be in one chapter. So it can be either from the Zener diode, it can either from the clipper question, it can be clamper question, it can be rectifier, it can be filter question, or the kind of questions you are trying to do just to check whether it is on or off. So basically resources are very limited. So that's why I have done so many questions in the class. If you want, I can reduce the number of questions in the class. Suppose I did around 20 questions. Next time onwards, I'll do 10 questions, and 10 questions I can give you as a practice, because you will not be finding the resources. So if you want, we can do that also. Now, if you see, isn't it like this that full wave rectifier is a combination of two half wave rectifiers? Yes. So the transformer utilization factor of the secondary winding will be 2 times of the transformer utilization factor of the half wave rectifier. चेक कर लो, आ रहा है 0.286 था उसका, चेक कर लो, डबल आ रहा है. Full wave rectifier is a combination of two half wave rectifiers. Therefore, tough of secondary winding will be 2 times the tough of half wave rectifier. Tough of half wave rectifier. That is, tough of secondary winding is equal to 2 times of half wave rectifier 0.286 RL upon RF plus RL. So TUF
of secondary winding will be 0.57 RL upon RF plus RL. So this way also we can handle it. This way also we can handle it. चलिए next, tough for primary winding. तो प्राइमरी वाइंडिंग के लिए टफ निकालते हैं. सो यू कैन सी ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग will be equal to DC output power divided by AC rating of primary winding divided by AC rating of primary winding. Now you see सर लास्ट टाइम तो हमने खाली एक ही वाइंडिंग का निकाला था, बिकॉज लास्ट टाइम AC rating of primary winding and AC rating of secondary winding was same, कि नहीं? इस बार गड़बड़ ये हुई कि सेकेंडरी वाइंडिंग में आधी में करंट एक टाइम गई, आधी में करंट एक टाइम गई. इस बार यही हुआ ना, सेकेंडरी वाइंडिंग में आधी में करंट एक साइड में, इसीलिए थोड़ी गड़बड़ होगी, दोनों की अलग अलग आ गई. आई बात समझ में? सेंटर टैप की वजह से दिक्कत हुई है. अगर सेंटर टैप नहीं होता तो सेम आता आंसर, फिर कोई दिक्कत नहीं थी. ये सारा काम किया धरा सेंटर टैप का है. बिकॉज इफ यू सी तो वोल्टेज है मेरी प्राइमरी पे, लेकिन इफ यू सी प्राइमरी में करंट का क्या है, एक हाफ साइकिल में ऐसे जाएगी, एक हाफ साइकिल में ऐसे जाएगी. लेकिन सेकेंडरी में क्या था कि एक हाफ साइकिल में ऐसे जा रही थी और एक हाफ साइकिल में ऐसे जा रही थी. डिफरेंस समझ में आ रहा है? वोल्टेज दोनों जगह सेम गई, यहां पे भी यही वोल्टेज थी, यहां पे भी यही वोल्टेज आई, लेकिन मतलब स्टेप डाउन होने के बाद, लेकिन करंट का बिहेवियर अलग होने की वजह से रेटिंग अलग हो गई. तो इसमें तो करंट ऐसी है, तो मैं सेकेंडरी प्राइमरी की तरफ दिखा रहा हूं, प्राइमरी की ऐसी है. सो अब अगर मैं इसके लिए रिजल्ट लिखता हूं, सो इट विल बी TUF of primary winding will be DC output power I DC square into RL divided by on the primary side इसकी RMS value IM by root 2, क्योंकि दोनों साइनस IS. VPIP should be VS into IS. VM IM, that is on the secondary side voltage is VM, peak value, and on the secondary side the current is IM peak value. Okay, and this can be further written as VM is IM into RF plus RL, so IM square into primary square pi square RL, and on solving this, TUF primary winding will be 248 RL factor for the center tabbed, that will be average of these two, secondary winding और primary winding का average लेके यूज करते हो. ठीक है? So therefore maximum TUF secondary winding was 0.57
तो ये हमारे पास जो है निकल के आया है। सुब्रानु, अगर तो ढंग का कोई डाउट होते हो क्या? अभी तो बच्चे ने बोला कि हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में हाफ वेव रेक्टिफायर में ऐसा होता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में जैसा प्रोसेस यहां पे वैसी प्रोसेस यहां पे आएगा, ठीक है? जैसा प्रोसेस यहां पे वैसी प्रोसेस यहां पे आएगा, सॉरी, जैसे यहां पे वैसे यहां पे आएगा हाफ वेव रेक्टिफायर में। इसका मतलब यहां से मैं अगर रेटिंग लू सेकेंडरी वाइंडिंग की या मैं यहां से रेटिंग लू प्राइमरी वाइंडिंग की, आंसर सेम आएगा। तो तुम यहां से कैलकुलेट करोगे, सेम आएगा, एवरेज लोगे, वही वैल्यू आएगी। सपोज यहां से आया ए, यहां से आया ए, एवरेज लिया ए, क्योंकि जैसा बिहेवियर यहां पे वैसा ही बिहेवियर यहां पे आएगा। सेम वोल्टेज यहां पे भी अपीयर होगी विद स्टेप डाउन, ऑब्वियसली सेम वोल्टेज आएगी। इसके बाद यहां पे करंट हाफ के लिए आएगी, तो भाई यहां पे भी करंट हाफ के लिए आएगी, बिकॉज आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। इफ द सेकेंडरी करंट इज जीरो देन द प्राइमरी करंट विल आल्सो बी जीरो, कोई करंट फ्लो नहीं करेगी यहां पे भी। तो सेम सिचुएशन, तो तुम यहां से कैलकुलेट करो, यहां से करो, आंसर सेम आ रहा है। पर यहां पे यहां से कैलकुलेट करने में और यहां से कैलकुलेट करने में अलग अलग आ रहा है, जो कि हमने यहां पे देखा भी। तो मैं वैल्यूज भी दिखा देता हूं। लो, यहां पे Vm Im बाई 2 आ रहा है, यहां पे Vm Im बाई √2 आ रहा है। ये अलग है, प्राइमरी और सेकेंडरी की जो रेटिंग आ रही है। इसकी वजह से टफ सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए अलग आया, टफ प्राइमरी वाइंडिंग के लिए अलग आया। तो हमने ओवरऑल दोनों का एवरेज लेके ओवरऑल मैक्सिमम टफ निकाल लिया, ठीक। हाँ, अगर समझ में नहीं आया कि मैंने ये बताया और ये समझ में नहीं आया, तो बोलो कि सर ये दोबारा रिपीट कर दो। सेम वैसे हाफ वेव रेक्टिफायर का था, वैसे सॉल्व कर लिया। फिर हम लोग एवरेज वैल्यू के लिए गए, फिर हम लोग आरएमएस वैल्यू के लिए गए, फिर एसी कंपोनेंट की आरएमएस वैल्यू निकाली, फिर रिपल फैक्टर निकाला, फिर फॉर्म फैक्टर निकाला हम लोगों ने। देन वी गो फॉर द एवरेज डायोड वोल्टेज, डीसी डायोड वोल्टेज। फिर हम पीआईवी के लिए गए, फिर पीक इनवर्स वोल्टेज निकाली, एफिशिएंसी निकाली, रेगुलेशन फैक्टर निकाला। वही जैसे कल किया, सब कुछ वैसा ही हम लोगों ने किया, सारे पॉइंट्स निकल गए। What do you think? What are the advantages of the full wave rectifier? The first thing that comes to mind is that greater efficiency. Efficiency हमारी बढ़ गई, efficiency हमारी बढ़ गई। रिपल फैक्टर घट गया, रिपल फैक्टर घट गया। सामने पड़ा हुआ है टीयूएफ बढ़ गया। गुड सत्यम, smaller, good Anshika, smaller of AC component is easy because omega naught is missing now. शाबाश, कॉमन, ठीक है। is fourth of easier फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फायदे, अब चलते हैं नुकसान में। डिसएडवांटेजेस क्या है? पीक विच कॉस्टली। एक भी चीज ये सब नहीं करूंगा, सीधा आंसर लिखूंगा, फट 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 सीधे आंसर्स, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखूंगा। एक भी चीज सॉल्व नहीं करूंगा, सीधा आंसर्स लिखूंगा। क्यों? बिकॉज अगर आपने ये कर लिया तो वो खत्म हो गया, कल खत्म रेक्टिफायर, कल रेक्टिफायर खत्म हो। एंड मोस्ट प्रोबेबली वी विल स्टार्ट विद द फिल्टर्स आल्सो टुमारो। आई विल ट्राई, नो, सो कल करेंगे, टाइम हो गया क्लास का। अबाउट पीवाईक्यूज, ठीक है। VM is, I know voltage is V. So combined secondary will be from first half power from here, from second half power from here. So the total I am getting. So what's the problem in that? From the one cycle in one is for the half, in another will be different. दोनों करंट फ्लो करती, फिर से डोमेन एनालिसिस शुरू होगा। टेक केयर, बाय बाय।